हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड एंड एफएसएसआई गाइड सागर शिर्के और मैं आज आपकी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका एफएसएसआई गाइड सागर शिर्के और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फूड प्रोडक्ट मार्केटिंग, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन। तो देखिए, फूड प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग और जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन है, आज हम उसके बारे में डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू ऑफ फूड मार्केटिंग एंड रेगुलेशन। तो देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और पब्लिक हेल्थ, बिजनेस इंटीग्रिटी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड रेगुलेटरी इवैल्यूएशन एंड एथिकल कंसिडरेशन, इसके लिए हम अभी चर्चा करने वाले हैं इन डिटेल। एंड ऑब्जेक्टिव होने वाला है टू प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशंस इफेक्टिंग अफेक्टिंग द फूड इंडस्ट्री। ठीक है। और देन देखिए फूड प्रोडक्ट मार्केटिंग। तो देखिए, फूड प्रोडक्ट मार्केटिंग इज अ मल्टी faceted process that involve various strategies and tactics to promote and sell food products to consumer. It encompasses everything from product development and branding to advertising and customer engagement. Then it's a key component. Market research and consumer insights, product development, branding, packaging, labeling, claims, pricing strategy, advertising and promotion, sales and distribution, customers engagement and sustainability. These are the key components of the marketing. ठीक है, in import and export regulation. देन देखिए, तो व्हाट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सो देखिए, स्टोरी टेलिंग एंड ब्रांड नैरेटिव, जो आप जानते हो ऑलरेडी, स्टोरी टेलिंग होती है। सेंसरी मार्केटिंग होती है विद द सेंस, विद द फील। देन हेल्थ एंड वेलनेस क्लेम कि व्हाट यू आर क्लेमिंग ऑन अ प्रोडक्ट। इन्फ्लुएंसर एंड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को आप इन्फ्लुएंसर्स को मार्केटिंग के लिए देते हो। देन सीजनल एडिशन होता है, लाइक सीजनल फ्रूट्स एंड लाइक दैट। Social media campaigns like FB, Insta, and all like social media platforms. You can campaign your product marketing. Then retail and point of sale promotion. Retails में भी maximum जो इंडिया में है वो retail promotions होते हैं. Then event marketing and sponsorships in that way. E-commerce and D2C. जो e-commerce है and direct to consumer है, इनके हिसाब से भी marketing की जाती है। देन मार्केट रिसर्च। तो देखिए, प्राइमरी रिसर्च में क्या होता है, सर्वेस एंड क्वेश्चनरीज, collecting data directly from consumers through structured questionnaires. This can be conducted online, over the phone, or in person. Then the focus groups, gathering a small group of people to discuss their perceptions, opinions, and attitudes toward a product or concept. Then interviews, conducting one-on-one interviews to gain deeper insights into consumer behavior and preferences. Then observational research, in which watching how consumers interact with products in real world and a setting such as in grocery store. तो ये कुछ प्राइमरी रिसर्च है जहां पर आप कर सकते हो। ठीक है, कंज्यूमर ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनरीज, फोकस ग्रुप्स एंड इंटरव्यूज। Then secondary research. In secondary research, people do like industry reports, in which analyzing existing reports and studies conducted by research firms, industry associations, and government agencies. उनका रिसर्च पेपर्स के ऊपर काफी ध्यान होता है। फिर मार्केट एनालाइज करते हैं, रिव्यूइंग डाटा फ्रॉम द मार्केट analyze reports and that provide insights into the market size, growth trend, and competitive landscape. Then competitive intelligence, like gathering information and on competitors products, marketing strategies and performance through public sources, like websites, financial reports, and new articles. ठीक है। देन स्टेप्स इन मार्केट रिसर्च, दैट इज डिफाइन द ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया जाता है, डेवलप रिसर्च प्लान किया जाता है, देन कलेक्टिव डाटा कलेक्ट किया जाता है, देन एनालाइज डाटा, एंड देन फाइंडिंग्स निकलती है कि विच प्रोडक्ट विल वर्क फॉर अस। ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट रिसर्च, इन विच अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर preferences, identifying market opportunities, then competitive advantages and risk mitigation, then optimizing marketing strategies. तो ये importance है market research का, that you have to understand. then branding and packaging के अंदर branding के अंदर brand identity, brand story, brand positioning and brand experience, ये matter करता है बहुत। इन ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग के अंदर मैटर करता है कि फंक्शनल पैकेजिंग, एस्थेटिक अपील क्या है उसका, इंफॉर्मेटिव पैकेजिंग क्या है, सस्टेनेबिलिटी पैकेजिंग क्या है, इनोवेशन इन दैट पैकेजिंग क्या है, तो ये भी काफी सारा मैटर करता है। Then marketing channels. The marketing channels are the pathway through which products or services flow from the producer to the consumer. Effective utilization of various marketing channels is essential for reaching the target audiences, increasing brand awareness and driving sales.
तो ये मैटर करता है. Then traditional marketing channels like retail stores, food service industry, wholesale distributors, and direct sale. These are the traditional market channels that we are using, and our lots of people using this type of channels for marketing. Then digital marketing is a new way channel in which e-commerce, social media, email marketing, content marketing, and digital marketing, advertising. तो ये कुछ डिजिटल ये मार्केटिंग के चैनल्स है जो काफी सारे पॉपुलर हो रहे हैं और काफी सारे लोग अपना प्रोडक्ट यहाँ पर मार्केट कर रहे हैं. और देन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन. Advertising and promotions, articles, components of a marketing strategy, especially of food products, they help increase brand awareness, drive sales, and build customer loyalty. इसके अंदर आप देख सकते हो कि एडवर्टाइजिंग एंड स्ट्रेटेजीज, इसके अंदर डिजिटल स्ट्रेटेजीज, ट्रेडिशनल एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग, ये भी जो चीज़ है ये मैटर करती है. देन आप देख सकते हो कि जो एडवर्टाइजिंग में और प्रमोशन के अंदर ये मैटर करती है. देन प्रमोशन स्ट्रेटेजीज के अंदर सेल्स प्रमोशंस, इन स्टोर प्रमोशंस, ट्रेंड प्रमोशंस, सीजनल प्रमोशंस, पब्लिक रिलेशंस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट. दीज आर द प्रमोशन स्ट्रेटेजीज. यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट किया जाता है. ठीक है, फ्री सैंपल्स वगैरह उसके अनुसार. तो देखिए, देन है इम्पोर्ट डेफिनेशन. Import refers to the act of bringing goods or services into a country from abroad for sale or use. ठीक है. Importing involves purchasing products or services from foreign countries to meet domestic demand. Importing goods can be essential for accessing resources, products, or technologies that may not be available domestically or are most cost effective to obtain from other countries. Then, importing can also contribute to economic growth by expanding consumer choices and fostering competition. ठीक है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इंपोर्टिंग, दैट यू नो ऑलरेडी. बट लेट्स टॉक अबाउट द इंपोर्ट रेगुलेशन. तो देखिए, कस्टम्स प्रोसीजर्स होती है, उसके अंदर टैरिफ्स एंड ड्यूटीज होती है, नॉन टैरिफ्स बैरियर्स होती है, एनडीबी कहा जाता है उनको, एंड स्टैंडर्ड्स and compliances, trade and agreements. So let's talk about the export definition. Export, on the other hand, refers to the sales or shipment of domestically produced goods or services to foreign markets. Exporting allows businesses to tap into international markets, thereby increasing their consumer base and potentially boosting revenues. And then, as a country often promote exports as a means strengthen uh, their economies, create jobs, and generate foreign exchange reserve. Exported goods can range from raw materials and agricultural products to manufactured goods and services. Then, export regulations. The in export regulations, that is export documentation, export control, compliance and licensing and trade facilitation. Then regulatory bodies. So which are the regulatory bodies for the import export? That is the World Trade Organization (WTO), International Organization for Standardization (IOS). Then European Union (EU) है, United States का है, Food Standard Agencies हैं, FSA. Then Customs and Border Protection Agencies, जिन्हें CBP कहा जाता है in USA. Agricultural and Trade Ministries जो है उन्हें ये चीज भी कही जाती है. ठीक है. देन इंपोर्ट रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट्स. देखिए, कस्टम्स डिक्लेरेशन, टैरिफ्स एंड ड्यूटीज, नॉन टैरिफ बैरियर्स, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंसेस, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड import prohibition and restrictions, inspection and testing, importer registration and certification, and compliance and penalties. जो ये चीज है ये import regulations requirement के अंदर कवर अप होती है. देन एक्सपोर्ट रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट्स के अंदर आता है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट कंट्रोल, एक्सपोर्ट लाइसेंस, सैंक्शन एंड एम्बार्गोज, the compliance with international standards, tariffs and duties, labeling and packaging, trade agreements, export restrictions, inspection and testing, exporter restriction, registration and certification, compliance and penalties. तो ये सारी चीजें हैं. Then what are the labeling requirements? देखिए, product identification, packaging requirements, international and regional standards, compliance and penalties. तो ये सारी जो है वो labeling requirements है. Then examples of success food marketing strategies. तो आज हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं. दैट इज द स्टोरी टेलिंग एंड ब्रांड नैरेटिव. बेन एंड जेरीज का एक एग्जांपल लेते हैं. दैट इज स्ट्रेटेजिस्ट. देखिए, बेन एंड जेरीज इज renowned for its storytelling and strong
brand narrative emphasizing social and environmental responsibility. Implementation, product names and stories. Each flavor has a unique name and a backstory, creating an emotional connection with consumer. Social mission, the company's commitment to social justice, environmental sustainability, and ethical sourcing is communicated through marketing companies reinforce its brand values. देखिए इसके अंदर impact क्या है? These strategies has build a loyal customer base that aligns with Ben and Jerry's values, leading to strong brand loyalty and advocacy. They check करते what is the influencer partnership and social media. Halotop. A strategy Halotop used influencer partnership and social media to reach health conscious consumers and rapidly grow its brand. Implementation कैसे किया? Influencer endorsement किया इसके अंदर. Partnering with fitness influencers and health bloggers to promote the product as a healthier alternative to traditional ice cream engaging. Then content creating engaging social media content that highlights the low calorie high protein benefits of their ice cream. Impact क्या हुआ इसके ऊपर? These approaches help Hello Top become one of the best fastest growing ice cream brand, attracting a significant following among health conscious consumer. तो ऐसा उनको फायदा हुआ. Then देखिए USP unique selling proposition USP the Chipotle Mexican grill. इन्होंने क्या किया? The strategy used by Chipotle's marketing strategy focused on its commitment to using fresh, locally sourced and ethically raised ingredients. इसके अंदर implementation कैसे किया? Food with integrity campaign emphasizing Chipotle indications to sustainable agriculture and in human animal treatment. Then transparent marketing, sharing information about ingredient sourcing and production process to build trust and transparency. उन्होंने यूएसपी ये यूज की. इम्पैक्ट क्या हुआ? चिपोटले स्ट्रॉन्ग यूएसपी हैज अ डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर food brand chains and attracting customers who value ethical eating and transparency. Okay, then limited time offers and seasonal products like Starbucks using a strategy like Starbucks frequently introduce limited time of offers, LTOs, and seasonal products to create business and drive sales. इसका implementation seasonal beverages popular offering like the pumpkin spice latte PSL generate excitement and urgency among consumers. LTO promotions like frequently introduction of a new and unique beverages and food items that encourages repeat, visit, and trials. Impact. These strategies have successfully driven foot traffic and increased sales, creating a sense of anticipation and exclusivity around new product launches. Then experiential marketing, Coca-Cola's Share a Coke campaign. In the Coca-Cola Share a Coke campaign focused on creating a personalized and engaging customer experience. उसका implementation ऐसे किया कि personalized labels, printing popular names on Coke bottle to create a personal connection with consumers. Interactive campaigns like encouraging consumers to share pictures with their personalized Coke bottles on social media using specific hashtags. In fact, this campaign significantly increased sales and brand engagement and making Coca-Cola a part of consumer personal and social experience. Then uh, health and wellness focused kind snacks like strategy kind snacks has a capitalized on the health and wellness trend by emphasizing the natural nutritious ingredients in its products. Implementation कैसे किया? Transparent labeling, clear labeling of ingredients and nutritional information to cater a health conscious consumer. Mission drive driven marketing highlighting the company's mission to create healthy and tasty snacks made from real whole ingredients. इसका impact हुआ? This focus on health transparency has attracted a loyal customer base and positioned kind snacks as a leader in the healthy snack market. तो ये इनके साथ फायदा हुआ. Then देखिए who regulation that regulates international trade in India. तो देखिए the DGFT Directorate General of Foreign Trade DGFT is a nodal agency responsible for the regulation of the international trade in India. It is an attached office of Ministry of Commerce and Industry Department of Commerce Government of India. इसका headquarter दिल्ली में है DGFT का. Important regulatory bodies in India. तो देखिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द आरबीआई which serves as India's central bank is in the charge of policing and nation's financial and monetary systems. Additionally, it serves as the last report
as a last resort lender for banks and other financial situations. Securities and Exchanges Board of India, SEBI. SEBI is the regulator of the Indian securities market. It is responsible for the regulating the trading and securities, the issuance of securities and functions of stock exchange. Then issuance of uh, Regulatory and Development Authority of India, IRDAI. The IRDAI is the regulator of the Indian issuance industry. It is responsible for regulating issuance companies, the issuance of insurance policies, and the settlement of claims. Pension Fund Regulatory and Development Authority, PFRDA. The PFRDA is responsible for the overseeing the Indian pension industry. It is in charge of overseeing the regulation of pension funds and pension plans and pension service providers. The National Bank of Agriculture and Rural, NABRD, NABARD, is a development bank. It provides a financial assistance to the agriculture and rural sectors. It also regulates rural credit institutions. A small industry development bank, SIDBI, it's a development bank for that provides a financial assistance to small and medium enterprises (SMEs), and it also regulates the SMEs. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI). TRAI is a regulator of the Indian telecom sector. It is responsible for the regulating the telecom services in telecom tariffs and the telecom infrastructure in India. Then CBFC, that is a Central Board of for Film Certification. The CBFC is the censor board of India. It is the charge of uh, approving films for public screening. Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI, is a regulator of food safety in India. It is responsible for the laying down standards for food monitoring and food safety and taking actions against food adulteration. Then Central Board of Indirect Tax and Customs, ठीक है, CBIC, the Central Board of Indirect Taxes and Customs, CBIC, is apex body responsible for the administrating customers, central excise, service tax, and narcotics in India. It cooperates under the Department of Revenue in the Ministry of Finance. CBIC plays a crucial role in policy making and implementation related uh, indirect taxes and customs duties in India. It also oversees the enforcement of the various indirect tax laws and prevent smuggling and facilitate legitimate trade and compliances. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो इंडिया के अंदर कौन सी जो एजेंसीज है वो जो रेगुलेशन है तो रेगुलेटरी बॉडीज है वो कवर अप करते हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इंडिया के अनुसार आपको एक इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। जो आरबीआई है, सेबी क्या काम करती है, आईआरडीआई आरडीआई क्या काम करती है, पीएफआरडीए क्या करता है, उसके बाद नाबार्ड का क्या रोल है, सिडबी का क्या रोल है, टीआरएआई ट्राई का क्या रोल है, सीबीएफसी जो फिल्म सर्टिफिकेशन का ये है, सीबीआईसी जैसे इनकम इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या रोल है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि फूड प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशंस के अंदर क्या क्या पॉइंट्स जो है वो मायने रखते हैं, क्या पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। And thank you so much for watching this video about the food product marketing, import and export regulations by the quality assurance and regulatory expert Sagar Shirke. And thank you so much for watching this video. I'm your host and दोस्त Sagar Shirke, and please like, share and subscribe this channel because काफी सारे लोग जो है वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, and please like, share and subscribe this channel. And thank you so much for watching this video, and thank you so much for supporting me. And I'm your brother, I'm your uh, host and host of this channel, Sagar Shirke, signing off. Thank you so much for watching this video again and again, and thank you so much for supporting me as